again, welcome back to the program. जिस तरह real estate industry ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੂਈ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਸਦ ਸੈਯਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਓ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਨੰਦ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Thank you. So let's talk a little bit about, starting from you, that what do you see being a long-time real estate developer and also in this industry for a long time? What are the trends showing and what should the people know about it? Well, the trends are showing a slowing market for sure, with inventories rising and prices actually dipping somewhat. Right. Where they'll stabilize, we don't know. I mean, for me to predict the future, I'd have to have a really good crystal ball. Right. But the trend is obviously slower sales. So what are the reasons? Generally around this month, when October, November comes, generally the sales are a little lower because the festival season is there and people start preparing for Christmas also. Is this the trend generally, or you're specifically finding it this particularly? I think we're seeing that this year, as we did in 2008, that is the trend. Okay. Typically, this season is a little bit more lively than the summer season, Right. but with the changes in the marketplace this year, we're not seeing that. Okay, we'll talk in details about it. असद जी, आप क्या देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन खास तौर के ऊपर हमारे साउथ एशियन लोग जो हैं काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं रियल एस्टेट के अंदर, तो ये जो अब सिचुएशन बड़ी बड़ी है खास तौर के ऊपर लोअर मेनलैंड में, ये क्या इंडिकेट कर रही है? हरप्रीत जी, जिस तरह अभी लुई ने मेंशन किया 2001 से लेकर 2007 और 8 तक कंटिन्यूस ग्रोथ थी जी। मार्केट जो है ना ऊपर जा रही थी 2008 में आके जो है ना मार्केट स्लो डाउन हो जी। गई और प्राइसेस नीचे जाने शुरू हो गई उसके एक साल के बाद ही दोबारा फिर मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई Right. और 2012 तक इट वेंट वेरी हाई Right. लेकिन क्या हुआ है कि ये अभी प्राइसेस जो है ना आउट ऑफ हैंड हो गई हैं ये सिर्फ उन्हीं लोगों को सपोर्ट कर सकती हैं जो कि बाहर से पैसे लेकर आ रहे हैं Right. इनकम के साथ लोकल इनकम के साथ ही सपोर्टेड नहीं है जी। इसलिए जैसे बाहर की मार्केट स्लो हुई है चाइनीज या एशियन पीपल आना कम हुए हैं मार्केट एकदम डाउन हो गई है ठीक है। इस वक्त जो है ना वैंकूवर रिचमंड वेस्ट वैंकूवर जहाँ के प्राइजेस डबल ट्रिपल हो गए थे वो बिल्कुल नीचे आ चुकी हैं Okay. और 10-20%। जी। तो अभी जो है ना जैसे साउथ एशियन मार्केट के लिए बेस्ट ये है कि मार्केट नीचे जाएगी Okay. और बेटर टाइम है थोड़ा वेट करें Right. उसके बाद इसके बारे में डिटेल से हम बात करते हैं थोड़ी सी. So Mr. Lewis, if you can tell us that we have talked, like you said, Mr. Asad is also pointing to the fact that the market is slowing down. Any particular reasons for that? He talked a little bit about Chinese people, investors not coming and buying the property, but the market is not just dependent upon them also. So what are the contributing factors which you feel? Because he also mentioned from 2001 to 2008 the market was robust and it was growing very fast. So there are cyclical trends in real estate as well as in any other field. So Absolutely. What do you feel right now, and what are the major contributing factors for this situation? Well, I think the pricing levels definitely have the biggest effect. We've reached levels that are not sustainable. Right. And what we saw was a lot of speculation in the marketplace. And that's what we think, took the pricing to levels that are not sustainable. Okay. If you look at the fundamentals of the economics, there's no economic fundamentals to support this pricing level. Right. And therefore, with the Asian market drying up somewhat, the adjustment is logical. Okay. So this adjustment, what we are talking about, it doesn't seem reflected in the prices of the properties as such. No doubt, as you said, there has been money. If we see the statistics from MLS, they show that sales have been less. But as far as the pricing of the houses is concerned, there hasn't been much effect. Why is that? We still don't have the full effect of the change yet. Okay. And sellers tend to think in history. Right. And historically, obviously, the pricing was very high. There isn't that pressure yet because interest rates are still relatively low. Right. In fact, they're historically low. That's right. And therefore, there's no real urgency in sellers having to sell the properties. But Okay. we see that in a flat market, the trend is that eventually the pricing will adjust. Okay.
बड़ी अच्छी बात की इन्होंने लुइस ने। और इसमें ये बताइए कि खास तौर के ऊपर जब सेलर की बात आती है तो दिमाग में जैसे वो बात बैठी हुई कि एक प्राइस जो उन्होंने अपनी मर्जी से सेट कर लिया और ऑफ कोर्स पिछले समय में उनको मिला भी, वो आज भी वही चीज वो चाह रहे हैं, तो आप सेलर्स जो है हमारे खास तौर के ऊपर उनको क्या आप समझते हैं कि किस चीज के ऊपर अगर उन्होंने घर बेचना है तो क्या चीजों पर ध्यान दें? सेलर्स के लिए आपकी बात सही है, हर आदमी एवरीबॉडी वांट्स टू मेक मैक्सिमम मनी, तो सेलर्स का भी ये ट्रेंड है। लेकिन प्राइसेस डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर, मार्केट कंडीशंस के ऊपर। मार्केट ट्रेंड नीचे जा रहा है, सेलर्स को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। दे कैन नॉट एक्सपेक्ट 3 times व्हाट दे वांटेड। सो अभी उन्हें अकॉर्डिंग टू मार्केट सेल करना पड़ेगा, which is about 20% less, 15-20%, so which is happened in last 2-3 months actually, 4 months. तो सेलर्स के लिए मेरा यही मशवरा है, अगर मार्केट से निकल रहे हैं ये टाइम है, अगर बेटर प्राइस मिल रही है बेच दें, इंस्टेड आप वो वेट करेंगे another month, another year, और वो नीचे ही अभी जाने का ट्रेंड है, then expect it's going to go up. Okay, Luis, you talked about general terms. We are in general terms when you see all across Canada that's the situation. But when we talk about BC and especially the Lower Mainland and the Greater Vancouver area, over here because we find that lots of immigrants are coming into British Columbia. So do you feel that that impact which is being seen all across Canada will be seen here also in the coming months or years? To some degree, I think that we'll feel that as well. However, we are on the Pacific Coast, which is, where everybody wants to live. And especially from, people from China and Hong Kong and Asian countries in general. So, we will not feel the impact as much as the rest of Canada, but we will still have adjustments. And you also talked about the price adjustments. So how much time do you feel that will take with your experience to have that impact seen on the prices also? Well, that's very difficult to predict, but it could take 2 to 3 years to have that adjustment. However, I do want to say that for buyers, these times actually present very good opportunities because you also have sellers that do have to sell, and bargaining is much better now. Some good bets. Absolutely. So yeah, if you're out there and you have the money, it could be a good time to buy. Okay. Let's talk a little bit about the realtors as such, because they are dependent upon the sales only, and as far as the statistics are concerned, the decline in the market is having an impact on them also. But of course, their expenditure, which is fixed, that is going to remain irrespective of the fact whether there has been a sale or not, the monthly expenses of the office and other thing. So what do you think? Is there some change coming in that also? Because MLS opened to the public also. Did that have an impact? Because right now in the market there are more realtors who want to do business and they go to any extent to get that one bite so that they can at least pay off with their expenditure. Right. There's various companies out there, and they're all pretty typical. Team 3000 Realty, which is the company we represent, has a very unique program for realtors in this market. And the program is really a membership program. It is not a monthly fee-based program. So we invite agents to become members of our company, and with a one-time membership fee, and that's it. So there are many companies of this kind which are coming out and offering these kind of services so that the realtors also find some relief. So towards the end, if you can talk a little bit about what advice would you like to give to the sellers and the buyers, and especially what, as you said, you cannot predict the future, but with what has happened in the past, we can at least analyze that and come out with something so that anybody who is jumping into this market right now, a buyer or a seller, what things should be kept in mind? Well, for sellers, I think they need to be realistic. They should price their properties at a price that is actually market or lower than market to make sure that they meet that price level. For buyers, keep your eyes open because there could be some good bargains to be had. Okay. और आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब जो लोग जहाँ पे भी बैठे हैं, कई लोग अपग्रेड करना चाहते हैं, छोटे घर से बड़े घर को जाना चाहते हैं, और जो मॉर्गेज रेट्स इस समय तो लो हैं, क्या इनके में भी संभावना है कि आने वाले समय में ये रेट्स बढ़ेंगे? उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उनको अगर एडवाइस ये है कि इस वक्त बाय करें अच्छी प्राइस पर, और इंटरेस्ट रेट चूँकि अभी भी बहुत अच्छा है, और फिक्स 5 years का जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी हिस्ट्री में इतना कम नहीं था, अबाउट 3 something, सो फिक्स करा लें।
और ट्राई टू गेट ए गुड डील, अपनी इनकम को देखकर परचेज करें. Right. Don't depend on the rental or basement suites as our Asian market, South Generally Asian it market depends. generally depend. So depend on their income and circumstances. और उस पर बाय करें तो then they will be okay. क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर 1 या 2% भी चेंज हुआ तो मार्केट में बहुत क्रैश होने का इम्कान है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया यहाँ पे आगे आपने ये इन्फॉर्मेशन दी. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. You're welcome. थैंक्स. Thanks ਸੋ so ਅੱਜ ਜਿਸ much. ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਦਮ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ. ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਲਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ. ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ.